डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव है और आज मैं होस्ट हूँ इस प्रोग्राम का। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम टू श्री सलमान खुर्शीद जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, and our Padma Shri doctors with whom we are going to have the initial panel today on healthcare as it should be, which is where we have Dr. D.S. Rana, Chairman Board of Trustees, Sir Ganga Hospital as the chief guest today. Dr. Rana has also arrived. Welcome to you, Dr. Rana. And on behalf of our respected Dr. Mohsin Wali Saab and Naz Wali ma'am, I again welcome you all for this beautiful evening. मेरा ये एजाज़ है कि मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के तमाम मुफ्जा शख्सियत, ओहदेरान और गवर्निंग काउंसिल को वेलकम करूं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत से लोग आज हमारे हेल्थ केयर सेक्टर से हैं। डॉक्टर वली के पैट्रनेज में उनके दोस्त और बहुत सारे डॉक्टर्स और पेशेंट्स और कम्युनिटी के लोग, और हमने हेल्थ केयर में एक आज टॉपिक सेलेक्ट किया है, हेल्थ केयर एज इट शुड बी। आई एम ऑल्सो द को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एन अपकमिंग हेल्थ केयर चेन, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर चेन पैसिफिक वन हेल्थ, और हमारा भी ये टैगलाइन है हेल्थ केयर एज इट शुड बी। तो इस पे आज हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर वली के मदद से to invite our respected group of Padma Shri doctors, our prominent doctors from Delhi NCR who have won Padma Awards, and they are very respectable in their fields. To start this panel, I would like to invite first our chief guest, Dr. D.S. Rana sir. Dr. Rana is a very leading nephrologist, बहुत ही पुराने, बहुत ही दिग्गज nephrologist हैं. He is also the chairman of board of trustees. सर पहले chairman of board of management बने, फिर board of trustees के chairman हैं सर गंगाराम hospital, one of the biggest trust based, one of the most respected and credible hospital what Delhi and India has seen till date. अब मैं इनवाइट करूंगा अनदर सीनियर मोस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, डॉक्टर A.K. ग्रोवर. डॉक्टर ग्रोवर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ विजन आई सेंटर, ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल. सर इज अ पद्मश्री लाइक डॉक्टर राणा. डॉक्टर ग्रोवर, वेलकम प्लीज सर. नाउ आई वुड वेलकम डॉक्टर अनिल कोहली सर, पद्म भूषण. Dr. Kohli is again a very leading dentist, the former president of Dental Council of India, and one of the most experienced policy maker in healthcare in our country. Dr. Kohli, please welcome. Now I would like to welcome Dr. Professor Anup Mishra. Dr. Mishra doesn't need much introduction. He is the leading endocrinologist, diabetologist, chairman of Fortis CDOC in Delhi. Padma Shri Dr. Anup Mishra. I would like to welcome Dr. A.K. Bhalla, Padma Shri. Dr. Bhalla is the chairman HOD of Nephrology, Sir Gangaram Hospital. He is a leading nephrologist of the country. Dr. Bhalla, please. And last but not the least, Dr. Mohsin Wali, Padma Shri. As the topic suggests, healthcare as it should be, it has got two implications. One, when you say healthcare as it should be, so this thought always comes in mind कि क्या आज का हेल्थ केयर इज नॉट एज इट शुड बी. दैट इज द फर्स्ट थॉट विच कम्स इन माइंड. बट ऑन द पॉजिटिव साइड, इफ यू लुक एट इट, द अदर पर्सपेक्टिव इज दैट एवरीबडी इन द हेल्थ केयर कम्युनिटी, वी डॉक्टर्स, वी द पॉलिसी मेकर्स, द गवर्नमेंट, द पेशेंट्स इन द कम्युनिटी, everybody is looking, aspiring to make healthcare as it should be in India, and so that there are always, in every sector there are some shortcomings, and healthcare has also got its challenges and shortcomings, particularly the deteriorating doctor-patient trust. There's a lot of blame in terms of transparency, ethical practices, and that's why we selected this topic, that what should be healthcare as it should be. I'll have a quick round of questions with each of our respected Padma Shri doctors, Padma doctors. I'll start with first Dr. Rana, who is also the chief guest of the program. So my question to Dr. Rana is, as someone leading India's largest trust hospital for a decade, what systemic changes would transform healthcare from a commercial enterprise
back to a service-oriented mission, how can we rebuild the trust that patients once had in healthcare institution? Dr. Rana, sir, please. Our goal should be universal health, and that is what we are striving for last more than 75 years. Every government which comes in power, they already raise the slogan, and we are making progress. Of course, we have not achieved. Yes, there are a lot of shortcomings, So I would not like to speak something like what you are talking about, commercialization and all thing. That also require defining actually. Media has really played a lot of role in playing this negative role as far as doctors and patient relationship is concerned. There is no doubt that probably there are some black sheeps, those who practice unethical practices and bring sort of bad name for everybody. Everybody knows that doctors should be empathetic and whatnot, The question comes that once they are working, right now, our health system as far as tertiary care is concerned, firstly, it is mostly available in the urban population, where about 25 to 30% people live. And even doctors are concentrated there only. There is a lot of disparity. But as far as malpractices are concerned, let us say, what sort of malpractices? Malpractices that is concentrated on charging. I will concentrate on that only. Firstly, I think in last 75 years, no government could have courage to correct the prices of drugs, especially MRP. Even today, when we have so much cry by the government that universal health for everybody, there is a lot of discrepancy in drug pricing. Why can't we do that? I know what is the ailment. Why can't we put that drug profit margin will be only this much, and that should be there. And genuineness of drugs. Now we say that use only branded drugs which are available recommended by government. But the same drug, when it is written to policymakers, they do not accept it. There is something lacking somewhere. I'm just talking negative. I not say something positive, not having positive happening. That is the one big step which comes to my mind. It always comes to my mind that it should be corrected, And that is how the cry that some drug is costing 10 rupees and hospital charging 30 rupees or 25 rupees. Hospital charging as per policy that they cannot charge more than MRP. So they are charging within MRP. The profit margin is very high. At the same time, I think government must decide the pricing of the hospitals in various cities, 2-tier, 2-tier, 3-tier, depending on the financial position of the land and all this in those hospitals, And once that price is decided, and it should be practical also, that the people those who are running the hospital, they are investing money actually. I'm talking of private players, people like Ganga is totally different, It is not people's, it is people's own money. It is not nobody, no industrialist or nobody investing from his pocket. It is all of the people those who are using the hospital, they are investing. It is their money actually. That is why we are adhering to ethical practice. We can afford that, But those people, those who invested money, they will require realistic price, So I think if those things are corrected, then there will be no malpractice, And as far as doctors are concerned, let us say they are doing malpractice, they are required to punish, But biggest problem or biggest challenge is, though we don't have enough doctors as far as if we compare to the rest of the world. But whatsoever doctors we are producing right now or we are having, they are also very substandard quality. And how to improve that? As far as I am concerned, the biggest problem is of having good doctors and good paramedical staff. But we are addressing this problem, trying to address. We have opened so many aims, but right now they are lacking staff. It will take maybe another decade before they could proper staff from their own institutes. Similarly, so there will be a lot of things. If we can go on speaking on this, we'll continue to speak. I think give some chance to somebody else. Thank you, Richard. Thank you, Dr. Rana. Very valid points made, sir. And yes, the challenge of the
quality of doctors and paramedics is big in India. I think we are overcoming over a period of time. And welcome to our respected Member of Parliament here, Janab Mohammad Adib Saab, Janab Mafsal Saab. Welcome, sir. I would like to go to Dr. Grover, sir. Sir, I think I'll ask you a very specific question related to eye and blindness. So, eye care when involves preventable blindness, yet many patients seek treatment too late. How can we shift from reactive treatment to preventive prevention? And what role should healthcare providers play in community education versus waiting for patients to come to us, sir? First of all, I must thank you for organizing this very important discussion on what healthcare should be. And I think what Dr. Rana has emphasized very well is the universal healthcare as a concept and the right to health, which a lot of people have spoken about. We are committed as a nation to doing that. We are on the way to making our best effort to do that, but the effort needed is much larger than what we've been able to tackle so far because of lack of resources, the amount of resources of healthcare that are put as a percentage of GDP being only about 2.5 to 3%. So those are various issues which need to be tackled so that we achieve that goal of universal healthcare. As for your specific question regarding the eye care, we know that National Program for Control of Blindness is one of the most successful programs of the Government of India with regard to healthcare, and we were able to reduce the prevalence of blindness from 1.5% to 0.34% or 35% in the 2015-2019 survey, which is a substantial reduction, and it could be brought about by very good interventions which included the initial camp approach, which was done as a field approach, and then at the base hospital approach, where the largest cause of blindness, which we all know is cataract, could be tackled well. And we as a nation should be proud of the fact that we have the highest cataract surgery rate in the world. We do almost 85 lakh cataract surgeries in the world, which is almost 3 times as much as China does, or 4 times as much as the US does, which is very good, so that we've been able to take care of that important cause of blindness. And the effort has then shifted to the other causes such as glaucoma, refractive error, corneal blindness, and posterior segment blindness. Now, many of these, which Sadeep ji, as he alluded to, are preventable causes of blindness. Amongst them, glaucoma, diabetic retinopathy, and age-related macular degeneration. These 3 things are very important because all these 3 are almost totally preventable from becoming a cause of blindness by timely interventions. And the most important thing in them is awareness and a need for a checkup every year after the age of 40 for every person, because these 3 conditions, the diabetic retinopathy, the age-related macular degeneration, and glaucoma, can all be detected in time and prevented. So that is one very important area. The second important area of prevention is in the younger age group, where uncorrected refractive errors remain a major cause of blindness, where people have the numbers, and myopia, as you know, is now becoming an epidemic, and it is expected that in the next coming 20 years, the prevalence would have increased to almost 50%, which it already has in some countries like in the Mongolian populations. So that epidemic is expected and we must be ready to tackle it. Myopia, uncorrected, is a cause of blindness, and that must also be treated. Fortunately, we've been able to take care of 2 or 3 important causes. One of them is the loss of vision due to the things like measles or chicken pox or other things. Second was malnutrition. I think we used to see in our earlier years of ophthalmology practice, a lot of people losing blindness due to vitamin A deficiency. That has virtually gone. When I started, as an oculoplastic surgeon, I used to do
most surgeries for correction of interning of eyelids and scarring due to trachoma or kukre or rohe, for which everybody was receiving treatment. Almost everybody had a trachoma. Today we don't see trachoma at all. My younger postgraduates have not seen a case of trachoma. So that is the difference that has come about because of better hygiene, better nutrition possibly. So there has been a major transformation in certain conditions, but these conditions remain a concern. The refractive error, the diabetic retinopathy, early pickup is important, age-related macular degeneration is a concern, and glaucoma is a concern. All these can be prevented as a cause of blindness. Thank you, sir. So we can say that from the time of independence to the 79th year of independence, at least we can say that eye care is as should be, sir. Long way to go. Yes, but we have made some progress. Thank you, sir. I'd like to move to Dr. Anil Kohli, Padma Bhushan. Sir, my question to you is, as former head of Dental Council of India, you have shaped policy at the highest level. What regulatory reforms are urgently needed to address the gap between dental care standards we mandate and what patients actually receive across different economic segments? And most importantly, sir, what we see the lack of awareness on oral health in India, which has never become a priority yet in spite of we are into 79th year of our independence. So your perspectives. Let me share with you the first thing. Oral health never been the priority, neither for the government nor for a common man. For various reasons. The reason one being we were a developing country. You take an example, like in 47, average age was 32 years in India, and today it is 72 years. Now, unfortunately, oral health is the one part where there is no repair. Like if you have a broken finger, if you have a cut on the body, it will repair by the self-repair. The body repairs or the human body responds. But in dental, if something is finished or some decay has happened, some tooth is broken, it has to be done by the artificial means. I'll tell you a very interesting thing. Many years back, I'm talking about 20-30 years back, there used to be very high duty on the dental goods, like 180% and all. When we reached to the finance minister and the secretary and other people, when we approached and we asked the duty should be brought down so that it should be available to the common man. And you will be surprised the answer I got at that time, not to be named or anything. They said, why should we reduce your duty on the dental goods? Reason? I said, eyes, they pay 5%, heart implants and other things, they pay 10%. He said, डॉक्टर साहब, आँख दो होती हैं, दिल एक होता है, दांत तो 32 हैं. आपका अगर एक आध चला भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? So this was the attitude I'm talking 30 years back. But lot of change has happened. And as you ask me, like the policy maker, I'm talking about 2005, 2006. And there was nothing like that that you have to do something called as continuing dental education to maintain your license. There was nothing like that that you have to publish or do a research to upgrade your position from a lecturer to a reader to a professor. So that time we brought a regulation that your license or your degree is not valid forever. You have to do the continuing dental education or the medical education. Both came together. And same way, it was necessary to do some publication to rise in the academic field also. And second thing which is missing, and Dr. Mishra, Anup will agree with me, is the research part. We have so much of clinical material, but we don't have the facilities. Firstly, researchers are not being taken as a professional, they go as an academician. And when you pass out from a medical school or a dental school or other places, you need good living. For good living, practice is the better option. But whereas you look into the other countries, they spend a lot of money on their research. In our country, the research is very, very nominal, the financially as well as availability of the things. Now coming to the other part. Why? See, we call it as a mouth is a gateway to the whole body. There are many diseases which we can recognize by examining the mouth. Now,
eating habits is a big problem. I'll talk about oral cancer. Let's talk about. We are the world capital of oral cancer in this country. In the rest of the world, the 1/6 of the body cancer is the oral cancer, but in our country, oral cancer is 1/3 of the total body cancers. If we go by the numbers. Now, oral cancer, if it is diagnosed at an early stage, it is preventable, because the mortality is only when it comes to 5 years only. But if you diagnose a oral cancer at an early stage, you can increase the life of a person to the 80 years, or 80% you can increase. From a small thing, if you have a small ulcer, and because we have the habit of pan eating, tambaku eating, all these things, now we do not make people aware about the bad effects, because government gets a lot of duty on those tobacco products. Excise is so high, so they don't ban. They put the picture on the carton where they show a cancer, but they don't stop that. So one side we are saying it is we should not do. Other side we are promoting also. Take the example, like we are the youngest nation, and we have 40% of the population, and we provide the 40% of the manpower to the world. But when comes, they follow the stars today. When a star is doing some ad of the tobacco or elaichi or these things on a screen, so that younger generation who is uneducated, they follow them and they look on them, and they also start following. So biggest thing is the awareness to be brought from the school level. At a very young level, you should have a chapter in the books where you give the importance to the teeth and to the oral health. Second is the availability to the common man. You may find a doctor or a dentist for 500 people in a city like Delhi, but there are places where you don't have a doctor or a dentist for 5 lakh people in a remote places. So second is the availability, and third is the affordability. How much they can afford, because we don't have insurance of dental insurance in this country. So these are the few points. We have made the progress, but there is a long way to go, and I think governments and the regulatory bodies and the professional can make change in bringing a better health for the common man in this country. Thank you. Sir. Thank you, sir. Very interesting perspective, sir. Now, also welcoming Dr. Praveen Chandra Padma Shri. Sir is the chairman of intervention cardiology at Medanta Medicity, and he is very popular in cardiologist in the country. Welcome, sir. Welcome to this panel. I'll move on to, before I go for an interesting chat with Dr. Professor Anup Mishra, I'll first move on to Dr. Bhalla. Dr. A.K. Bhalla, sir, Padma Shri is the chairman of nephrology at Sir Ganga Hospital. Again, I'll ask you a very specific, your disease is a specialty related question. Chronic kidney disease often progress silently until late stages. How can we create large-scale community screening programs that detect kidney issues early, especially in high-risk population, before dialysis or transplant becomes inevitable? Can you please answer this? Yes. Thank you. First of all, I would like to thank Pacific OneHealth for giving me the opportunity to come on this stage for panel discussion. Now, as far as CKD is concerned, CKD, it has become like epidemic, and it is the sequelae of Dr. Anup Mishra is sitting next to me. It is a diabetes actually, and Lancet always comes with the very, very scary statistics that there are 22 crore people diabetes in our country, and double the number are pre-diabetes, which are not still diagnosed. And only 2 days back, the study came that 1 in 6 person is having diabetes. If that kind of statistics are there, now diabetes has become the number 1 cause of chronic kidney disease in our country, and other one is hypertension, followed by chronic nephritis, and then genital diseases like polycystic kidney disease and renal calculus disease or renal stones and infections. Now, if you see the changing pattern, 30 years back, it was the infections which were predominant in our country. And similarly, kidney also was following infection, post-infectious nephritis, and leading on to chronic kidney disease. The spectrum has changed completely.
right from infectious diseases, communicable diseases. Now we are shifting to non-communicable diseases, and the main the causes which are leading are cancer, cardiovascular disease, chronic kidney disease, and of course obesity, and this metabolic associated steatoid liver disease, which is again becoming like epidemic. Every third person actually today is having fatty liver. So it is a non-communicable diseases which are the leading cause of chronic kidney disease. And 1 in 10, now this is a very, very scary figure, that 1 in 10 person in any our population is having chronic kidney disease, which is very high. If you see 1 in 10 person is having chronic kidney disease. So that's why we have to have a prevention and early detection screening of chronic kidney disease. This screening or seed study, that is not a seed study, early detection and screening for chronic kidney disease. We have to have this kind of screening at national level, which unfortunately in 2 years when I was the president of Indian Society of Nephrology, I started this seed project, and we did about more than 1 lakh patients across the country by measuring their HbA1c and urinary albumin creatinine ratio and blood pressure, and if possible ultrasound, because simple early test like urinary albumin creatinine ratio or simple urine routine examination, all these tests cost around 500 rupees. So in just 500 rupees you can screen a patient for early chronic kidney disease, and the leading causes are diabetes and hypertension, and all these patients are actually with internists or physicians. But that education has to be at the level of physicians, not only postgraduates, but our general practitioner or MBBS doctor, even BAMS doctors who are practicing. So every day we have the patients coming with diabetes, but they have never been tested for urine routine examination or albumin creatinine ratio, or even ultrasound has never been done. Patients, as rightly said, as in the question, that patients are coming to us at a later stage. So if we have 5 stages of CKD, majority of our patients in our practice, they come beyond stage 3. So we never get patients in CKD stage 1 or stage 2. Now, fortunately, since 2019, lot of drugs have come which can slow down the progression of chronic kidney disease, especially in diabetic population. So various new diseases have come, starting from SGLT2 inhibitors. Then we have now these MRAs. So then we have even sotabitar, which has been found to be slowing down the progression of kidney disease. Then now we have GLP agonists. You might have heard in the paper all these Mounjaro, Ozempic, and other semaglutide. So all these drugs are found to be useful in slowing down of progression of chronic kidney disease. So it is very important that CT has to be this. The screening and early detection should be done. Thank you. So I'll come back to our very popular Dr. Professor Anup Mishra sir. So my first question is a very simple, straight question. Second will be a little controversial. The straight question is on diabetes management requires long-term patient partnership, yet many patients lose trust due to the conflicting advice and treatment failures, which is very common see. How can endocrinologists better communicate the reality of chronic disease management while maintaining hope and compliance? एक टिप्पणी करूंगा पहले कि मैं वैसे जाना जाता हूँ डेविल सर्टिफिकेट शैतान का वकील. मैं बात जो क्रिटिकल होती है वो मैं कहना पसंद करता हूँ. 20 साल पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में हमको इनवाइट किया गया नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बनाने के लिए. उस समय हमने एम्फसाइज किया कि साहब डायबिटीज़ बढ़ रही है और ओबेसिटी बढ़ रही है. तो उस समय मुझको डांट दिया गया कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये सारा एनीमिया है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन है, आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हो. वो समय था जब हमको कंट्रोल करना चाहिए था. उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं.
तो मैं हमारे सारे कोलीग्स ने काफ़ी प्रोत्साहन वाली बात करी, लेकिन मैं उतना प्रोत्साहित नहीं हूँ एज पर डायबिटीज़ कंसर्न, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि 3 दिन पहले ही जो नई रिपोर्ट आई है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में, 30%, 1 in 3 people in Delhi are diabetic and 15% have pre-diabetes, and उसमें से 50% लोगों को पता नहीं है, और केवल 50% लोग, सदीप का सवाल है, 50% लोग सही इलाज पर हैं और केवल 7% लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग पर हैं, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है। ये स्टैटिस्टिक्स है, और इसको कई लोग बड़ी प्राउडली कहते हैं, साहब अरे इंडिया तो डायबिटीज कैपिटल वर्ल्ड है, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट दिस। इसके लिए सदीप, मुझको लगता है कि आंसर सिटी में नहीं है, आंसर लाइज इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि आजकल जो हम गरीबों को और उस वर्ग को डायबिटीज काफ़ी देख रहे हैं जिनमें कोई भी नॉलेज नहीं है कि डायबिटीज़ किस तरह से होती है या क्या करती है आपकी बॉडी को। जैसे डॉक्टर भल्ला ने बताया कि किडनी डिजीज वगैरह, हार्ट डिजीज डॉक्टर परवीन चंदा बताएंगे, ये कोई भी नॉलेज नहीं है, और वही लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और जो लोग सिटी में और अमीर लोग हैं उनके पास ट्रेडमिल भी है, वो जिम भी जा सकते हैं, वो सारे अच्छे डॉक्टर्स को, सिटी में नहीं आंसर है इस चीज़ का। इसका आंसर सेमी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में है। अगर हम उसको स्टेम कर लें वहाँ पर, तो ज़्यादातर हम डायबिटीज़ को काबू कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं है, किसी हिसाब से नहीं हुई है। 2 डिकेड से कोई भी इसमें लेटअप नहीं है, और नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हमारे पास है, लेकिन उस पर उतना काम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, और इसके कारण हम डायबिटीज़ ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ देगी, क्योंकि इधर जा रहे हैं किडनी के पेशेंट, उधर जा रहे हैं लिवर के पेशेंट, उधर जा रहे हैं आँख के पेशेंट, और उधर जा रहे हैं हार्ट के पेशेंट। सारा डायबिटीज़ से संबंध मूल रूप से हम नहीं पकड़ पाए उस चीज़ को। तो मैं इस चीज़ में निराशावादी हूँ काफ़ी, कि हमको इस चीज़ में हमारे गवर्नमेंट को, हम सब लोगों को और भी करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट सर। Diabetes and heart health are interrelated, sir. So I think Dr. Mishra has already given a big answer to the heart health problem, because diabetes is one of the root cause of heart problem. I'd like to ask Dr. Chandra his perspective on the technology, because he is in heart health. He is one of the pioneers of bringing in the most advanced technology in the intervention of heart treatment in India. As a leader in cardiac interventions, you have seen technology revolutionize treatment options. How do you ensure that advanced procedures are recommended based on patient need rather than institutional capabilities or revenue considerations? Keeping in mind, sir, our topic of the day for discussion is healthcare as it should be. So, is cardiac care as it should be, or there's some big gaps in there? Thank you, first of all, Sudeep, and thank you everyone to be here. So, जो अभी आपने इन्होंने सवाल पूछा कि कार्डियक केयर की क्या स्थिति है इंडिया में, यही पूछ रहे हैं। और सबसे पहली बात तो हमें ये बता दें कि हार्ट इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे, यानी कि कोई भी बीमारी, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे किडनी हो, पेशेंट की डेथ हार्ट से ही होती है। और हम लोग किस चीज़ का इलाज करते हैं कि भाई डेथ से बचाओ या परेशानी से बचाओ, कोई इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो हार्ट इज़ द सेंटर पॉइंट। चाहे किसी को किडनी प्रॉब्लम हो तब भी वो हार्ट से ही जाएगा, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, वो भी हार्ट से जाएगा। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा था कि कुछ इस तरह की दवाइयाँ, कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं शुगर में भी, डायबिटीज़ में भी, जिससे हार्ट डिजीज़ बचती है। अभी तक ये दवा इलाज चलता था कि भाई शुगर को कंट्रोल करो, लेकिन अब ये भी बात हो रही है कि शुगर तो कंट्रोल हो, हार्ट डिजीज़ भी बचे। अगर किडनी डिजीज़ है तो हार्ट डिजीज़ भी बचे। इस तरह की बहुत सी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, जो कि आप लोग को धीमे धीमे पता चलेगा। इस वक्त तो सब नहीं बता सकते, कुछ बताई भी गई हैं। तो ये दवाइयाँ जो कि हार्ट से बचा सकती हैं शुगर पेशेंट्स को, वो दी जाती हैं। उसमें मुख्य है जो कि स्टैटिन, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की दवा, जो उन्होंने बताया कि 90% लोग नहीं खाते हैं। तो हर डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर की दवा खाए या ना खाए, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाना बहुत ज़रूरी है। ये शायद बहुत से लोग जिनको एडवाइस भी की जाती है तो कहते हैं मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, हम क्यों खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। सो दैट इज़ नॉट राइट। एक तो ये बात है। तो यानी कि
दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अभी आज से 20 साल 25 साल पहले ये होता था कि ये दवाइयाँ किसी की अमेरिका से आ रही, किसी की इंग्लैंड से आ रही है। ये दिल्ली में सुनने में आता था, बाहर लखनऊ में तो नहीं होता था जहाँ हम लोग थे। लेकिन यहाँ के लोगों को चूँकि उसकी एक्सेस थी, बहुत से लोग बाहर जाके इलाज कराते थे अपना हार्ट के लिए, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि आज की तारीख में किसी भी पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को यहाँ से किसी भी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे एडवांस ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो सब अवेलेबल है, और वो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और उनकी वजह से बहुत सी जानें बच जाती हैं। स्पेशली अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो ये सबको जानने की बात है कि पहले घंटे के अंदर, जिसको कि हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए किसी की इन 1 आवर, तो 75 to 80% लोगों की हार्ट सेव भी हो जाती है और उनकी लाइफ भी बच जाती है। और जबकि आज से 20 साल पहले डॉक्टर अनूप मिश्रा को पता होगा कि जब ये लोग बात करते थे कि इमीडिएट एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, तो सब लोग कहते थे अरे ये हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इट इज़ टुडे पॉसिबल, इट इज़ बीइंग डन एंड लॉट्स ऑफ लाइव्स आर बीइंग सेव्ड। सो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या उसके सिम्टम्स आते हैं, तो उसको विद इन 1 आवर नियरेस्ट पॉसिबल, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना है या मेदांता जाना है, कहीं जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल है जहाँ एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, वहाँ जाके तुरंत करानी चाहिए। तो ये तो हो गई बात एंजियोप्लास्टी की। और जो स्टेंट्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको, बहुत से लोगों को आजकल ये भी शक हो जाता है कि अरे भाई एंजियोग्राफी करा रहे हैं तो ज़बरदस्ती स्टेंट डाल देंगे। ऐसा नहीं, आपकी एंजियोग्राफी ही तभी हो रही है क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लॉकेज निकलती है अगर, तो उसकी करानी चाहिए। क्योंकि बहुत से बार हम लोगों ने देखा है कि लोग बाग उस वक्त मतलब नहीं करा पाते, और बाद में वो, क्योंकि हार्ट का जो मामला है उसके अंदर क्या होता है, या तो सिम्टम होते रहेंगे या फिर पेशेंट को लैप्स कर जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूर करा लेना चाहिए। जब भी कोई एडवाइस करे, चाहे तो किसी से राय भी ले सकते हैं, बट आम तौर पे प्राय राय सही होती है। और दूसरी बात टेक्नोलॉजी की जो आजकल आ गई है कि अब हम लोग एडवांस्ड एज के पेशेंट्स को ठीक कर लेते हैं। जैसे पहले होता था कि 60+ अगर कोई हो गया तो लोग कहते थे भाई रहने दो, इलाज थोड़ा बहुत कर लो, घर पे ही रखो, कुछ मत करो। बट नाउ वी हैव गॉन, जैसे कि पिछले 20 साल में हम देख रहे हैं, पिछले 30 ईयर्स से जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ट की, हम लोगों की पहले एज होती थी 60 के बियॉन्ड, कहते थे चलो अच्छा देखते हैं करना है कि नहीं करना है। फिर कहने लगे 70 के बियॉन्ड करना है कि नहीं करना है, फिर 80 के बियॉन्ड करना है कि नहीं करना है, कि 80 साल के हो गए इनका क्या इलाज कराना, इनको तो चलने दो दवाइयों पे। ऐसा नहीं, पीपल आर एक्टिव, दे कैन गेट एंजियोप्लास्टी डन सेफली, स्टेंट्स भी लग सकते हैं सेफली। और लास्ट बात जो हम कहना चाह रहे हैं, बिकॉज समय ज़्यादा नहीं है अभी, कि वाल्व्स को भी चेंज किया जाता है। पहले माना जाता था कि वाल्व्स जो हैं सिर्फ 50 साल 60 साल तक चेंज होते हैं। द एल्डेस्ट पेशेंट विच आई हैव डन valve replacement without any surgery, this is without surgery, so कहते हैं percutaneous valve replacement, she is 97. So I was also not very sure कि भाई क्या किया जाए इनका, so I kept discussing with her कि are you keen? Yes, of course I want, मेरे को करना है, उनकी सारी फैमिली के लिए हमें करवाना है। तो she went all around करते करते हमारे पास पहुंच गई कि करा दीजिए। तो हम लोग भी बड़े शेकी थे कि करें कि ना करें, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। बट शी सर्वाइव्ड एंड शी गॉट डिस्चार्ज इन 3 to 4 days टाइम, 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी हो गई वो, 97, एंड शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ फीलिंग बेटर। सो कहने का मतलब ये है कि एडवांस एज इस तरह के प्रोसीजर के लिए कोई रुकाव नहीं है, कराया जा सकता है अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। So that means that people can live up to 100 years, जो हम longevity की बात करते हैं। yes. इस प्रोग्राम की रूपरेखा हमने डॉक्टर मोहसिन वली साहब के साथ रखी थी, और उनका ये सुझाव था कि ये टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, हेल्थ केयर एज इट शुड बी। सो दिस प्रोग्राम would not end before having your perspective on healthcare as it should be. अपनी छोटी सी एक बात रखूंगा 1 मिनट में। पैसिफिक ये वर्ड जो ये लाए हैं, बेनेवोलेंस है जी, इसका मतलब शांत है, इसीलिए इसको हिंदी में हम प्रशांत महासागर कहते हैं। और मैंने फिर और रिसर्च की तो मुझे इसका अच्छा मतलब मिला सौम्य। सौम्यता हम सब चाहते हैं डॉक्टर साहब,
मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हेल्थ केयर एज शुड बी हमारा सबका नारा इसलिए होना चाहिए कि आजकल लोग जो पेशेंट्स हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं और एक कॉमन मैन की हिम्मत नहीं होती जो वो बड़े हॉस्पिटल में जाए। 1 मिनट में 4 सेंटेंसेस बोल के ख़त्म कर दूंगा। फॉर आइज ऑफ एवरी इंडियन हु स्टिल बिलीव्स हॉस्पिटल एग्जिस्ट टू हील नॉट टू हार्वेस्ट। हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टेंस है टू हील है और कुछ नहीं है। वो सब शब्द आपको मालूम है, मैं नहीं बोलता। What was once a deeply human ecosystem driven by values and service of sacrifice became a marketplace on a global spreadsheet. This is what actually we are here for. कि इस कॉकस को तोड़ना है। And there is very sad part I read only 2 days back when he asked me to speak on this. The great hospital handover. Manipal Hospital was made. And I was briefed a little bit because I did MBA from Manipal University at the age of 48. It is backed by Temasek and TPG Capital. Aster DM tied to Olympus Capital. Max Healthcare owned by Radiant Life Care and BMH backed by KKR. Care Hospitals controlled by Every Care, a TPG CDC vehicle. Fortis Healthcare acquired by Malaysia's IHH Healthcare. Medica Synergy financed by Pan Asian Investor Networks. Sahyadri Hospitals until recently controlled by Canada's Ontario Teachers Pension Plan. ये क्या हो गया है भाई? ये इबादत के मंदिरों को क्या हो रहा है? ये किसके लिए काम करेंगे? हमारे लिए या उनके लिए? ये बड़ा एक थॉट दे रहा हूँ मैं इस मजमे को, और हम सब ये ना हो इसके लिए यहाँ के बैठे हैं। डॉक्टर राणा, आपके आशीर्वाद के लिए आपने जो मॉडल गंगाराम में डेवलप किया है ओवर द एजेस, वो ऐसा मॉडल है। मैं जब गंगाराम हॉस्पिटल जाता हूँ मुझे ये डर नहीं होता कि डॉक्टर राणा कहेंगे आज तुम 10:20 पे क्यों आ रहे हो, या कोई मुझसे अटेंडेंस नहीं लेगा। वो एक फैमिली है, वहाँ हमें पता है डॉक्टर राणा दिस गंगाराम मॉडल हैज मेड अस मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देयर इज नो ऑडिट ओवर अस, वी आर आवर ऑडिटर्स। जब कलम चलाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है क्या ये मैं MRI हेडेक के पेशेंट के लिए ठीक लिख रहा हूँ या पेट स्कैन ठीक लिख रहा हूँ। वहाँ मुझे अपना ऑडिट खुद करना है। आपने जो मॉडल दिया है ना वो सुपर में वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और जो एक फैमिली का एटमॉस्फेयर है गंगाराम हॉस्पिटल में, वी ऑल शुड प्रे कि वो वर्ल्ड के हर हॉस्पिटल में हो। सर, डॉक्टर राणा, so that means does that mean that Gangaram model is the answer to healthcare as it should be, sir? Your comments. डॉक्टर साहब ने कुछ और प्रॉब्लम हल की है, कुछ बहुत बताया। मैं सब लोगों को आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सेंचुरी में ओवर लास्ट 100 ईयर में, मोस्टली 75 ईयर में मेडिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। बीमारी का क्या कारण होता है, बीमारियाँ कैसे होती हैं, यहाँ तक कि सेलुलर बायोलॉजी उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ डे जो हम लोग तरसी के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और एंड स्टेज डिजीज से डील कर रहे हैं, कोई हार्ट से, कोई किडनी से, कोई डायबिटीज से, और उससे ये हमारे देश की या किसी भी देश की पॉपुलेशन के जवाब नहीं है। जवाब है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करो, और उसको मैनेज करने के लिए चाहिए अच्छे डॉक्टर। वो MD MS ऐसे नहीं चाहिए। पिछले ज़माने में जब MBS डॉक्टर थे, MBS डॉक्टर जो है एक अच्छे स्कूल से पढ़ा और अच्छी तरह ट्रेन किया जाए और अच्छा फैमिली फिजिशियन बन सकता है। वो फैमिली फिजिशियन ही आपका केयर टेकर होगा, तब बीमारियाँ रुकेंगी। चाहे डायबिटीज़ से किडनी डिजीज नहीं हो, डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज नहीं हो। तो अनूप मिश्रा जी तो आपको अवेलेबल है ना, उनको लोगों जो वहाँ बैठे हैं, रूरल छोटे शहर में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, उनके लिए वो MBS डॉक्टर ही सब कुछ है, भगवान है वो प्रॉपरली ट्रेंड। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को या किसी भी जो आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, एक जो टीचर की वैल्यू है उसको रिस्टोर करो। टीचर एक गुरु है। ये सारे लोग जितने बैठे हैं यहाँ, ये सब अच्छे टीचर बन सकते थे। ये टीचर क्यों नहीं बने? ATC में हम पास हुए हैं। हमें मेडिकल कॉलेज में एम्स में होना चाहिए। सरकार ने एम्स खोली, हम नहीं बैठे, हम जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे गंगाराम है, मेदांता, कहीं वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। तो जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, जो अच्छे टीचर बन सकते हैं, जब तक टीचर्स वो नहीं होंगे तो आपके डॉक्टर नहीं बनेंगे।
नए डॉक्टर नहीं बढ़ेंगे तो जो भी कुछ चंद डॉक्टर जो हैं वो सारे शहरों में बसते रहेंगे और जो दूसरे डॉक्टर हैं वो, इसलिए जो वैल्यू है इस टाइम कि समझो कि पिछली हाफ सेंचुरी में यदि हमने बीमारियों के बारे में जाना तो इस सेंचुरी में ओनली क्राइज कि आप कितना भी जानते हो, कुछ पढ़ते रहो, मॉलिक्यूलर एस्टिलिटी इन्वर्टर की बात करें, सब कितनी दवाइयाँ निकल रही हैं, डॉक्टर साहब ऐसी ही सर्जरी की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, और ठीक है लाइफ को प्रलॉन्ग करने के लिए। और लाइफ को यदि और ज़्यादा प्रलॉन्ग करना और मासी की प्रलॉन्ग करना है तो आपको अपना प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारे कंट्री का सिस्टम बहुत अच्छा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के वही सिस्टम है आज भी, वो चेंज नहीं हुआ है, उसी को स्ट्रेंथन करना है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इतना कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्रोग्रेस तो हो रही है, उन्नति हो रही है, हर साल उन्नति कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रही जो हम चाहते हैं। आपकी PMJ स्कीम चली, अब उसकी खामियां या उसके अच्छे गुणों को मैं नहीं गिनना चाहता हूँ यहाँ, पर मैं इतना ही कहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से सरकार को एक क्वालिटी डॉक्टर और एक क्वालिटी पैरामेडिकल स्टाफ्स, जो नर्सेज होती हैं और टेक्नीशियन हैं, वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उसी से इंडिया की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। इससे नहीं इम्प्रूव होगी कि डायलिसिस कर रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं या अच्छे वो कर रहे हैं किसी को। ये तो सब टर्सरी केयर हेल्थ की प्रॉब्लम, टर्सरी केयर तो कोई पेशेंट पहुँच नहीं चाहिए। इन चंद शब्दों को कहता हूँ कि बस ये बहुत अच्छा आपने योजित किया था। Quite conclusive. Just one last question. I have been very inquisitive about this question, asking to Dr. Professor Anup Mishra sir. Particularly, it's very concurrent topic in these days. So I'd like to end this program with your answer. First of all, sir, congratulations. You have also built a center of excellence in the private sector at Fortis. Thank you. And my question is about when we talk about healthcare as it should be. So new things keep coming. Like one of the newest thing is Ozempic, Mounjaro, which is the now talked of as a magic pill for obesity. Left, right, everybody is taking, from youngsters to mid-age people to elders, sir. So, do you think these sort of supplements is answer to healthcare as it should be, or it is something more to that, sir? सदीप, आपने एक करंट टॉपिक को छोड़ दिया है और कंट्रोवर्शियल है ये, लेकिन सदीप आप तो सारे मेरे स्टेटमेंट्स जो अखबार में आते हैं वो पढ़ते रहते हैं। मैंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, मैंने कहा ये ड्रग जो कि वेट लॉस ड्रग्स हैं और डायबिटीज़ को भी कम करती हैं, हार्ट को भी बचाती हैं, किडनी को भी बचाती हैं, ये ड्रग आंसर नहीं है। ये जो देश के लिए आंसर है वो पब्लिक हेल्थ है और पब्लिक हेल्थ मैसेजेस हैं। और मैं इसके एक बस उत्साहवर्धक बात हुई है कि इधर पब्लिक हेल्थ मैसेजेस प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अच्छे दिए हैं, जैसे ऑयल कम करना, ओबेसिटी कम करना। और मैं रोज़ ट्विटर पर देखता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर कोई ना कोई मैसेज दे रही है और बच्चों स्कूलों पर भी ध्यान दे रही है। उसमें समोसा जलेबी वगैरह पर ये ध्यान दिया गया है कि इसको कम खाया जाए। इस तरह के मैसेजेस, सिंपल मैसेजेस, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैसेज, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये देश की जो अपनी सेहत है उसको बेहतर करेंगे। ओलंपिक वाली ड्रग नहीं करेंगे। ओलंपिक कुछ लोगों के लिए हैं, बहुत महंगी हैं और उनका वेट कम कर सकती हैं, लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन के लिए डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड रेगुलर चेकअप, दीज आर द थिंग। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैसेजेस बच्चों से शुरू होने चाहिए और वयस्क तक जाने चाहिए।